we are going to cover such sentences which we generally use in our discussion. Alright, we are going to cover such sentences which we generally have in our discussion, right? So points which are often discussed during our conversation. ऐसे पॉइंट्स जो अक्सर डिस्कस किए जाते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में, ऐसे सेंटेंसेस, उन पे हम आज डिस्कशन करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा वो सेंटेंसेस डिस्कस किए जाते हैं, राइट? जैसे सबसे पहला जो डिस्कशन का पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा रहता है कि अगर आपको किसी से ये पूछना हो आप यहाँ कब से हैं, हाउ विल यू आस्क? आप यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कब से हैं? एक मिनट, यू हैव टू रिप्लाई कॉन्फिडेंटली. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप राइटिंग, लिखते जाइए. और जिनको कॉन्फिडेंस है अपने रिप्लाई में वो लोग अपना अपना रिप्लाई दें. और अगला सेंटेंस है, इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले आप क्या करते थे? What were you doing? उस दिन वो कहाँ था? तुम्हें इससे क्या मतलब? अब देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारी बातचीत में अक्सर यूज होते हैं. तो सबसे पहला सेंटेंस है, आप यहाँ कब से हैं? तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? सो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं डायलॉग प्रैक्टिस. क्या कहते हैं इसे हम? आप अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करिए. मतलब अगर आपको किसी से पूछना है कि आप यहाँ कब से हैं तो कॉन्फिडेंटली बोलिए. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले आप क्या करते थे? What were you doing is also correct, and what did you used to do is also correct. Both are correct. या simply आप कह सकते हैं, where were you before this organization? Where were you before this organization? Actually, message must be conveyed. Alternatively, you can also say, what did you used to do before this organization? What were you? No, what did you? Okay. And any other way to ask someone, इससे पहले आप क्या करते थे? You may also use which profession did you have before this organization? देखिए, यहां से एक बात और निकल के आ रही है कि एक सेंटेंस को डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके हैं. What position did you hold before this organization? What was your profile before this organization? So we can find multiple ways
एंड हमें इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें इसका सेंस निकालना है। एंड डायलॉग डिलीवरी में वन मस्ट बी वेरी स्ट्रांग, उसको एकदम सॉलिड बोलना चाहिए। कैन वी हैव वन मोर सेंटेंस? What were you up to before this organization? What responsibilities did you have before this organization? Sentence ही sentence आते जा रहे हैं, right? So I just want to tell you कि बहुत सारे तरीके हैं एक सेंटेंस को कहने के। आप में से कितने लोगों को हेजिटेशन होता है अपनी बात को कहने से पहले? हर पल एक बात सताती रहती है कि मेरा ये सेंटेंस सही है कि गलत है। ऐसा होता है ना? इसको रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, इसको रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करिए। इसे हम लोग कह सकते हैं डायलॉग प्रैक्टिस, ठीक है? क्या कह सकते हैं? डायलॉग प्रैक्टिस। देखिए, एक बात सही है, आप भी इस बात को मानते हैं कि जो लोग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोलते हैं उनकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश में बहुत अंतर नहीं है। केवल और केवल डिफरेंस है डायलॉग को अच्छे से डिलीवर करने का। जैसे आपने कॉन्फिडेंटली किसी से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? अब देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है ये सॉलिड है, ये आपका क्वेश्चन एकदम सॉलिड है। सो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को अपने डायलॉग्स को डिलीवर करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, कभी कभी वो पेन पेपर लें और अपने डायलॉग्स की केवल इंग्लिश बनाएं जो कि मल्टीपल तरीके से आप कह सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को रट के नहीं बोला जा सकता। डू यू ऑल अग्री? हमें रटना नहीं है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं अभी 10 टाइम्स और तरीके से बना सकता हूं। यस, दिस इज द फैक्ट। तो आपको क्या करना है, आप कभी कभी पेन पेपर लीजिए और अपने किसी भी डायलॉग को आप मल्टीपल तरीके से लिख करके देखिए। जैसे अगला डायलॉग है, उस दिन वो कहां था। इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, वेयर वॉज ही दैट डे। बट अभी भी बहुत सारे तरीके हैं। कम ऑन, थिंक ओवर इट। वेयर वॉज ही बिजी दैट डे? What made him so engaged that day? What was he doing that day? Where did he have his gracious presence? आप सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा सजा के भी बोल सकते हैं। Where did he have his gracious presence? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग डायलॉग्स को और इडियोमेटिक बनाते हैं। इडियोमेटिक का मतलब है उसमें एक सर्टेन इंग्लिश का ऐसा फ्रेज लगाते हैं जिससे थोड़ा सा और कैची सेंस आए। कम ऑन, व्हाट मोर सेंटेंस कैन यू गिव? हाँ, where was he? Where was he giving his precious time that day? आपने कहा था what was he up to that day? I mean to say multiple thoughts आपके दिमाग में इस समय आ रहे होंगे। और ये जो छोटा सेंटेंस था वेयर वॉज ही दैट डे,
अब आप हड़बड़ा के नहीं बोलोगे, कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे वेयर वॉज ही। अब आप सॉलिड बोलोगे, वेयर वॉज ही दैट डे, व्हाट मेड हिम सो बिजी, व्हाट मेड हिम सो स्पेशल, वेयर डिड ही एग्जिस्ट दैट डे, मे आई हैव एन आइडिया ऑफ हिज एग्जिस्टेंस दैट डे। क्या बोलेंगे? मे आई हैव एन आइडिया of his occupation that day. May I know where he was occupied that day? May I know where he was occupied that day? ओके तुम्हें इससे क्या मतलब? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। यस, इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। और एक एक करके लिखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, सेम मीनिंग। हाँ, इट्स नॉट योर ग्राउंड। अच्छा है, ये भी तरीका है। इट्स नॉट योर ग्राउंड ऑफ प्ले, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। वैसे ये कप ऑफ टी मतलब थोड़ा कैपेसिटी को दिखाता है, तो इसमें सूट नहीं करेगा। कम ऑन, थिंक मोर। हाँ, you don't require any intervention. Intervene into it. हाँ, नेक्स्ट क्या था? किसने बोला था? How does it affect you? You can ask like this. हाँ, I want to know your sentence. हाँ, how does it mean to you? How does it mean to you? So आप देख सकते हैं कितने मल्टीपल तरीके हैं एक सेंटेंस को बोलने के। चलिए, ये 4 सेंटेंस मैंने दिए थे। मे आई हैव योर सेंटेंस। आप में से किसी को ऐसा कोई डायलॉग पूछना है जो थोड़ा सा टफ लगा हो और उसे वो पूछना चाहता हो? ओके, माई सिंपल मैसेज टू यू ऑल इज, हमने अपना हैंड बहुत जल्दी रेज किया था कि आई हैव डिफिकल्टीज इन माई डायलॉग्स, आई कीप थिंकिंग अबाउट माई डायलॉग्स। डिड यू रेज योर हैंड? बट वी हैव नो लिस्ट। दैट्स द अमेजिंग पॉइंट। नाउ लिसन टू मी एवरीवन, if we have a list we have solution, if we have a list we have solution. So simply, if you track your ideas, if you track your own sentences, I am the one who can give you not only one translation, I can give you multiple sentences, and not only I, even you can also give. आप सभी को भी खूब आइडियाज इस समय आ रहे कि नहीं? चलिए थोड़े और सेंटेंस में देता हूं। जैसे ही उसने तुम्हारे बारे में पूछा, मैं शॉक्ड था। As soon as will be better. तो हाँ, as soon as he asked about you, I was shocked. Yes, it's right. As earlier, it will be better. As soon as he asked about you, I was shocked. हाँ, I was shocked when he mentioned you. Good. Some other sentence? You may use the moment.
ये भी हमारी बातचीत में बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, द मोमेंट। द मोमेंट का मतलब है जिस क्षण उसने ऐसा किया। हाँ, द मोमेंट ही आस्क्ड अबाउट यू आई वॉज शॉक्ड। और वो तो एक ही बात है, और थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए सोचते रहिएगा, आपको कुछ मिलता है तो उसको ऐड करिएगा। एक सेंटेंस और देता हूं। वाइल तो कोई एक्टिविटी होने के दौरान होता है, जैसे यात्रा के दौरान मैं कई जगह रुका। हाँ, ऑफ कोर्स आई वॉज अमेज्ड when he asked for you। for ask तो लगाया ही नहीं, asked for you, आपके लिए पूछा। so while I was on journey या during journey, I stayed there, I had many sojourns। सजन्स का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे। आई हैड मेनी स्टॉप्स, हॉल्ट्स, स्टेज। दिस वे यू कैन यूज। हाँ, ड्यूरिंग माई जर्नी, ऑफ कोर्स यू मे से ड्यूरिंग माई जर्नी। सो ऐसे डायलॉग्स हमारी बातचीत में बहुत सारे मिलते हैं। जैसे आपने कहा कि एग्जाम में टॉप करना तो दूर, उसने प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं किया। वह प्री तक So, who would like to answer? Yeah. Even of qualifying the exam, even of doing top in the exam, we did not qualify. Top नहीं, top. नहीं, अभी ये फ्रेम नहीं हुआ। This is not framed. अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप अपने डायलॉग्स की डेली ट्रैकिंग करें तो दिन में आपके पास कम से कम ये तो रेडी होगा कि आपको क्या नहीं आता है। तो ये ट्रैकिंग आप क्यों नहीं कर रहे? इस मिशन में आप लगिए, आपको बस एक काम करना है, यू हैव टू ट्रैक योर डायलॉग्स। जो भी डायलॉग आप बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं उसमें कंफ्यूजन है। जैसे मैं आपको और भी सेंटेंसेस दे रहा हूं। वह कौन सी बात तुम लोगों को नहीं बता पाया? ये लंबा सेंटेंस है, आप इसको और शॉर्ट और मॉडर्न तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, टेल वर्ड आप यूज कर सकते हैं। What was that tongue twister? उस दिन पूरा दिन वह घर पर क्या करता रहा? Where he was wasting his time.
Yeah. That's the way you can say yes. वो फालतू में तुम्हारे ऊपर क्यों चिल्लाने लगा? Why he was shouting at you? नहीं, why was he shouting? That's not correct. Grammatically it is wrong. Because there is a sense of लगा लगा लगा, चिल्लाने लगा. If the sentence had been कि वो क्यों चिल्ला रहा था, your sentence is correct. But my sentence is चिल्लाने लगा. Yes, it should be why did he start shouting? Why did he start shouting? Shouting at you unnecessarily. वैसे अगर आपको ऐसे डायलॉग्स की एक बुक मिल जाए, क्या आप उस बुक को पढ़ना चाहेंगे? श्योर? इज इट नीडेड? ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक. लेकिन अब मुझे ये बताइए, क्या वो डायलॉग्स की प्रैक्टिस आपको आपकी लाइफ में हेल्प करेगी? मुझे तो नहीं लगता है. लिसन, कम ऑन से, माय डायलॉग्स, माय लाइफ. How can other person write my dialogues? The reality is that book will be of no use. Do you all agree or not? Come on, say once more. My life, my dialogues. How can next person know my dialogues? Even I don't authorize anyone to write the dialogues of my life. I am the owner of my own dialogues. But all of you said so passionately, yes sir, give me that book, that will definitely help me. Come on sir, you can give, that is going to be very interesting for us. अब देखिए, वो बुक पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं क्या है? ऐसा नहीं है. बस ये है, आपकी वो प्रैक्टिस अच्छी करा देगी. क्या फायदा होगा? आपकी प्रैक्टिस अच्छी करा देगी. लेकिन सच्चाई यही है कि हम इम्प्रूव करते हैं अपने ही डायलॉग से. किसी बुक के डायलॉग से हम इम्प्रूव नहीं करते. तो आप लोग इस मिशन में शामिल हो जाइए. स्पोकन क्लास में एक ही मिशन, मुझे अपने डायलॉग्स दिन भर के तो रेडी करके आइए, दिन भर के केवल ले करके आइए. चलिए, पूरा दिन वो घर पे क्या करता रहा? कीप का यूज होगा. वो बात एक अलग की है, व्हाट वाज ही डूइंग फॉर द होल डे, सेंस आ रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल. बट कीप का यूज भी आपको सीखना चाहिए. व्हाट डिड ही कीप डूइंग फॉर द होल डे? कम ऑन से, व्हाट डिड ही कीप डूइंग? He only kept watching movies. It's very surprising. Let's have a next sentence. Which matter? Couldn't. अब couldn't नहीं है, couldn't है. Couldn't नहीं, couldn't. Which matter? Couldn't he discuss with you? Which matter couldn't he discuss with you? Your each dialogue has importance. Analyze, realize, and finalize. What is its English? You tell. Okay. Not to talk of. Chopping the exam. Chopping the exam. Even. He couldn't qualify pre-exam. Topping the exam is far away. Topping the exam is far away. Even he couldn't qualify pre-exam.
Topping exam is far away. Topping the exam is far away. Even he couldn't qualify pre-exam. Even he couldn't qualify pre-exam. One more way is there. One more way is there. Can you tell? Can you tell? There is one more way. Topping the exam is too far, he couldn't even qualify the pre. No, too far or far away is fine. There is one more way. हाँ, let alone. किसने बोला? Clap for this boy. Good one. How? पूछो how? How did you guess this? How did you guess this? I did. You have been in my sessions earlier. Okay. This I have taught in my sessions. So the best way to have a good grip on these topics is to attend the sessions. Come on, say let alone. Let alone. Let alone topping the exam. Let alone topping the exam. Even he couldn't qualify Even he couldn't qualify pre-exam. pre-exam. Have you opened that page? All right. But I must appreciate your memory. Retention of content is so nice. So students, कैसे लगे ये डायलॉग्स आपको? देखिए, मैं हार्श स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये डायलॉग्स आपकी लाइफ के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों. जस्ट बिकॉज आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की. लेकिन सच्चाई ये है, मेरे साथ बोलिए, until we take care of our own dialogues, We take care of our own dialogues. these dialogues will not help us. These dialogues will not help us. Let us track our own dialogues Let us track our own dialogues. and let's bring them Let us bring them in the discussion, in the discussion. especially those dialogues in which I have doubt, Especially those dialogues in which I have doubt. and I can be more confident. And I can be more confident. Your assignment is Your assignment is write down at least 10 dialogues write down at least 10 dialogues of your practical communication of your practical communication where you humble, where you humble, where you fumble, where you fumble, not humble. not humble. Write down Write down at least at least 10 dialogues 10 dialogues of your practical life of your practical life in Hindi in Hindi or in English or in English in which in which you fumble. you You fumble. fumble. You fumble. कई बार किसी से हम बात करते समय 2-3 बार उसको रिपीट कर देते हैं, हमें श्योरिटी नहीं होती. उसका बेस्ट तरीका है, उठाइए पेन पेपर, उस डायलॉग पे काम कर लीजिए. जैसे इसकी बात करना तो छोड़ो, ये भी नहीं हुआ, लेट अलोन कितना अच्छा है. जैसे आपने कहा टाइम देना तो छोड़ो, उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है. बोलो लेट अलोन गिविंग टाइम, Let alone giving time. इवन ही डजंट हैव टाइम फॉर हिमसेल्फ. Even he doesn't have time for himself. कितना आपको अच्छा कमांड आ गया. सो वैसे इस डिस्कशन का कोई लिमिट है? No, sir. देयर इज नो लिमिट. लेकिन इस डिस्कशन में हम प्रोफिशिएंसी जरूर ला सकते हैं. कैसे? डेली अपने डायलॉग्स को फिल्टर करके. कम ऑन से लेट्स फिल्टर Let's filter आर दोज डायलॉग्स are those dialogues in which we fumble. in which we fumble. It's a challenge for all of us It's a challenge for all of us to smoothen our dialogue delivery. to smoothen our dialogue delivery. And the best way is And the best way is to track our dialogues to track our dialogues and to shortlist and to shortlist those dialogues those dialogues which are really tough for us. which are really tough for us. It will not only make you comfortable in dialogues, It will not make you comfortable with dialogues, comfortable in dialogues, comfortable in dialogues, but it will also make you expert in vocabulary. but it will also make you expert in vocabulary. You will never have any fear You will never have any fear regarding your vocabulary regarding your vocabulary because you have worked because you have worked in your all aspects. in your all aspects. This is the source of my confidence also. This is the source of my confidence also. Since I have worked Since I have worked on most of the dialogues, on most of the dialogues,
So I don't hesitate to have your dialogue. I'm looking for such dialogues which can be the part of my book. Bring your dialogues. That's your assignment. Okay, thank you. Thanks, sir. Jai Hind.